Good morning, student. How are you? Hope you all fit and fine at home. Students, today we will start our 10th chapter, that is my surroundings. Students, surroundings. Surroundings means everything that is near or around us. The place where you live. It is surrounding. It means आपके आसपास. Okay, environment. Environment, this atmosphere. So, student, chapter is my surrounding. My surrounding means everything that is near or around us. Environment, atmosphere, पर्यावरण. Okay, students, 10.1 PAP is here. Shiraz took photographs of the places he visited during his vacations. Complete the given caption. कैप्शन है शिराज टू फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस ही विजिटेड. वो घूमने गया था, वहाँ के कुछ कैप्शंस हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं शिराज ने जो लिए. नाउ फर्स्ट, आई डे एट द डैश. सेकेंड, अ डे एट द डैश. Third, a day in the dash. And fourth, a day at the dash. So student, it is the pack. Fill it. Okay. Now try your best. After that, we will discuss and complete this activity. But first, you will try. Now, you have 2 minutes for fill it. I will explain the chapter. Now, student, each place Shiraz visits is an environment. An environment is the surroundings in which we live, move around and work. Plants, animals and people around us are all a part of our environment. So, our environment also includes the sun, air, land and water. These are called the elements of nature. So, students, your 2 minutes completed. Now, in first, our day at the, where he is sitting? In the park. Now, second, a day at the, look the caption look. It is beach. Now third, it is forest. Now fourth, here is farm. So park, beach, forest, farm. Now each place Shiraz visited is an environment. ईच प्लेस जहाँ पे शिराज है विजिट कर रहा है वो है एनवायरमेंट. एन एनवायरमेंट इज अ सराउंडिंग. तो आवर चैप्टर इज सराउंडिंग. इट इज़ अ सराउंडिंग इन विच वी लिव, मूव अराउंड एंड वर्क. जहाँ पर हम वर्क करते हैं, मूव करते हैं, रहते हैं, वो है एनवायरमेंट और हमारा सराउंडिंग. प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल अराउंड अस आर ऑल ऑफ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल ये हमारे एनवायरनमेंट के हिस्से हैं. आर एनवायरनमेंट आल्सो इंक्लूड द सन. हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं सन, एयर, लैंड और वाटर. कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं नेचर के, प्रकृति के कुछ फैक्टर्स हैं, तत्व हैं. व्हाट इज अ प्रकृति? इट इज अ नेचर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज. It is a page number 62. Okay, beach side. The beach, the park, the forest and the farm are different type of environment. ये different type के environment है. Okay, beach है, park है, forest and farm, ये कुछ हिस्से हैं environment के. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि environment को कुछ हिस्सों में, भागों में बांटा गया है. जैसे बीच है, पार्क है, फॉरेस्ट है, फार्म है. तो इट इज़ द बीच साइड. सन, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ये फैक्टर है नेचर का. सन प्रोवाइड लाइट एंड वार्मथ टू ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स को वार्म करता है, लाइट देता है, हेल्प करता है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ओके स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस to make the food. Now here, coconut tree living there, sources of food for living things, home to birds and some other animals. Source of food for living things. Living things का source of food है
कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये फूड के रूप में काम आता है ज़्यादा कोकोनट के, लाइक फॉर एग्जांपल गोवा, केरला and southern portion. Now home to birds and some other animals. Home to birds and some other animals. कुछ animals और birds के home. Students here, sea water element of nature, home to fishes and other sea creature. Sea water. Look at here. It is a sea water. It is a home to fish and other sea creature. Sea creature means समुद्र में रहने वाले जानवर. Sea creature. उनका घर है ये. Which one? Sea water. Sand. Elements of nature. It's also a elements of nature. Sand. Home to animal like crab. Crab का home है. Sand. Crab, you know crab? Okay. So student, on this page, we are studying about beach side. So on the beach, we saw sun. It is the elements of nature. Coconut tree, it is living things. Sea water, element of nature. And sand, elements of nature. Okay students. So move on. Next page. Here, a park. Here, sun. It is also an element of nature. Provide light and warmth to all living things. Helps plants make their own food. Here is a tree. Tree is living thing. And on page number 62, we are studying about what? Sand. It is a home to animals like crabs. Here, trees provide fresh air to breathe for all living things, provide shelter for some animals and birds. Shelter means home. Okay, it's a provide a home. Here, dog, duck and humans. Living things depends on land, water, air and plants to live. Lake, elements of nature. Elements of nature. First point here, home to birds like ducks and fishes, sources of drinking water for animals and birds. So students, you all know we are studying about my surrounding. It means our environment. So many things in environment like beach, park, forest and farm. So in this chapter we studied about beach side on page number 62 and a park on page number 63. And we studied about elements of nature. Students, move on next page. Here, page number 64, elements of nature. You know elements, component of nature. Sun provide light and warmth to all living things. Helps plants make their own food. Help trees, living things, home to animal, birds and insects. Provide fresh air for all living things. Provide food for living things. Who? Trees is a living things. River, elements of nature. Sun, elements of nature. River, home to animals like fishes. Provide water for all living things in the forest. Okay student. So in the forest we saw trees and rivers and animals, plants, trees and so many things. Now move on next page. Here afar. First point here, pond, element of nature. It is a factor of nature. प्रकृति के तत्व. Home to fishes and ducks. Home है fishes and ducks का. Sources of drinking water for all living things on the farm. Who provide this? Pond provide the sources of water for all living things and trees also. Hens, living things give us eggs, pack on the worms in the soil to keep pests away. Pack on the worm. Soil में से कीड़ों को हटाती हैं ये. Who? Hens. और इनको eat करती हैं. Hens. So pack on the worms in the soil to keep pests away. Cows. It is living thing, gives us milk.
crops, living things. You know students, living things means जीवित चीजें, जिंदा चीजें, उन्हें बोला जाता है इंग्लिश में लिविंग थिंग्स, जो ब्रीथ करती हैं एंड क्या करती हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, उन्हें बोला जाता है लिविंग थिंग्स. नाउ प्रोवाइड फूड फॉर लिविंग थिंग्स ऑन द फार्म. हु? क्रॉप्स. क्रॉप्स क्या करता है? प्रोवाइड फूड फॉर लिविंग थिंग्स ऑन द फार्म. सॉइल, इट इज अ एलिमेंट ऑफ नेचर, होम टू worms and insects, helps trees and grass grow. Soil क्या करता है? It is also elements of nature. Pond is also elements of nature. Sun elements of nature. River elements of nature. And main thing is that कि we are studying about the my surroundings. Okay, environment. So in environment so many things are there. Forest, farm, and elements of nature, rivers, ponds, sun, these are the elements of nature. So soil is the elements of nature, home to worms and insects, help trees and grass grow. हेल्प करता है ट्रीज और ग्रास को ग्रो होने में, ये एलिमेंट्स है नेचर का, और होम है ये वर्म्स एंड इंसेक्ट्स का, यानी insects or worm, you know it is. Okay students, we are on page number 66. Here observe the image of the different environments in the previous pages. In the given table, list one way in which each elements of nature helps the living things in that environment. Exactly, in this chapter we are studying about the my surroundings environment. We know elements of nature, soil, water, sunlight, air, these are the elements of nature, and these elements of nature helps our environment. In first, soil, how it helps our environment? So help, how soil is help in the nature. Okay students, now soil helps plants grow. क्या करती है soil? How it helps our environment? The soil helps plants grow. Water, it is a elements of nature, factor of nature, helps animals, birds, plants and humans survive. Sunlight, sunlight is a elements of nature, it's provide light and heat for life on earth. Air, air helps plants, animals, birds and humans breathe. So I hope you all understand. We are studied about my surrounding. In this chapter we are studying about elements of nature. So sun is element of nature, soil is element of nature, water is element of nature, sunlight is element of nature, air also are elements of nature. And how it helps our environment? Soil helps plants grow, water helps animals, birds, plants and humans survive, sunlight provides light and heat for life on earth, air helps plants, animals, birds and humans breathe. ओके स्टूडेंट्स, हम हमारे पर्यावरण के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वातावरण के बारे में स्टडी कर रहे हैं. हमें देखना है हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीजें हैं. हाउ मेनी थिंग्स सराउंडिंग अस, these are called environment. Okay students, here look within. You have a choice to visit a rose garden or a mango farm. Which one would you like to visit? Why? Reason बताना है. आपको चॉइस दी है कि आप रोज गार्डन या मैंगो फार्म में से कहीं जा सकते हैं. चॉइस दी है, आपको चूज करना है और आपको रीजन बताना है कि आपने, अगर इफ यू विल चूज अ रोज गार्डन, so why? If you will choose a mango farm, so why? Give the answer here. Now students, there are many examples of how humans and other living things depend on these elements of nature to stay alive. बहुत सारे एग्जाम्पल, so many examples we are studying. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन दीज एलिमेंट्स, कि सब डिपेंड हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचर के ऊपर जिंदा रहने के लिए, टू स्टे अलाइव.
Okay, sunlight helps plants grow. Animals eat plants or the flesh of other animals. They take shelter in bushes, trees, rocks, and caves. This exchange, these are the exchange between living things and the elements of nature is known as the interdependence. हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट है. हाउ सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो. Animals eat plants or the flesh of other animals, and they take shelter in bushes, trees, rocks, and caves. And we also eat vegetable, fruits given by trees. So this exchange between the living things and the elements of nature is known as the interdependence. ये जो एक दूसरे के ऊपर हमारी निर्भरता है, इट इज अ बार्टर. सनलाइट प्लांट्स ले रहे हैं, देन एनिमल्स उसको ईट कर रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, है ना, क्रॉप से हमें फूड मिल रहा है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से बदल रहे हैं, तो हम क्या हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है. तो हमारे लिए इन्वायरमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी ब्रीथ करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी होता है. तो हम भी इंटरडिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, ट्री के ऊपर. क्योंकि ट्री क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. तो हम भी क्या हुए, हम डिपेंडेंट हो गए. ओनली ऑक्सीजन के लिए नहीं, हमें फूड भी मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस एक्सचेंज बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ नेचर इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस. ओके स्टूडेंट, so we will meet in next video. Thank you so much student to listening me.